ज्यांच्या घरातले आपले कुटुंबीय काही सदस्य हे लंडनसाठी रवाना झालेले होते, ते सगळे त्यांचे नातेवाईक सध्या या सिव्हिल रुग्णालय परिसरामध्ये पोहोचतायत. तर त्यांचं नेमकं काय झालं, कोण जखमी झालेलं आहे, त्यांच्याबद्दलची माहिती सध्या त्यांच्याकडनं केली जाते. दरम्यान एअर इंडियानं एक्स अकाउंटवर प्रोफाईल जो आहे तो आपला हटवलेला आहे. मृतांना श्रद्धांजली म्हणून डीपी मध्ये आपला काळा रंग, त्यांनी ब्लॅक कलरचा आपला प्रोफाईल फोटो सध्या ठेवलेला आहे. एअर इंडियाचं हे विमान होतं, बोईंग विमान होतं. AI-171 हे विमान जे आहे, या विमानाचा अपघात घडलेला आहे. ड्रीमलायनर 787 या विमानाची क्षमता जवळपास 300 प्रवाशांची असते आणि एक मजबूत विमान असतं, प्रवाशांच्या आवडीचं हे विमान असतं. दरम्यान ही जी आता दृश्य आहेत ही समोर आलेली आहेत. किती भयानक, किती मोठा असा हा अपघात आहे हे सांगणार ही सगळी दृश्य आहेत. संपूर्ण परिसरामध्ये धुराचे लोट पाहायला मिळतात. छिन्न विछिन्न सध्या संपूर्ण ये विमानाचे अवशेष पडलेले पाहायला मिळतात. अनेक रहिवासी भागाचं जे नुकसान झालेलं आहे, इमारतीचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेलं आहे. त्यासोबतच बचाव कार्य मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे. आगीवर नियंत्रण मिळवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. दरम्यान ज्या रुग्णालयाच्या इमारतीवर हे विमान कोसळलेलं होतं त्याचे देखील संपूर्ण हा जो फोटो आहे, जो व्हिडिओ आहे तो देखील आता समोर आलेला आहे. या रुग्णालयातले जवळपास 15 डॉक्टर्स यामध्ये जखमी झालेले आहेत आणि यासोबतच या विमानामध्ये गुजरातचे माजी मुख्यमंत्री विजय रुपाणी हे देखील सध्या प्रवास करत होते. दरम्यान विजय रुपाणी यांच्या घरातले हे जे सदस्य आहेत ते सध्या प्रार्थना करत आहेत, देवाचा धावा करत आहेत. अर्थात या सगळ्याबाबत किती जणांचं यामध्ये किती जीवितहानी झालेली आहे याचा आकडा अद्याप समोर आलेला नाही, परंतु मोठ्या प्रमाणामध्ये जीवितहानी झाली असू शकते अशी शक्यता सध्या वर्तवली जाते. सध्या स्थानिक प्रशासन आहे ते मोठ्या प्रमाणावर कामाला लागलेलं आहे. स्थानिक प्रतिनिधी पोहोचलेले आहेत. त्यासोबतच जे आपत्कालीन यंत्रणा आहे ती देखील सध्या कामाला लागलेली आहे. तर तिकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देखील संपूर्ण या परिस्थितीवर लक्ष ठेवलेलं आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्यासोबत त्यांनी चर्चा केल्यानंतर त्यांना तातडीनं अहमदाबादला जाण्याची सूचना पंतप्रधान मोदी यांनी केलेली आहे. अगदी काही वेळातच आता या ठिकाणी अवघ्या 1 तासामध्ये अमित शहा कदाचित पोहोचू शकतील असा अंदाज वर्तवला जातोय. तर दुसरीकडे आतापर्यंत जी या संपूर्ण घटनाक्रमाची आपण वेळ पाहिली तर साधारणपणे दुपारी 1:31 या विमानानं उड्डाण घेतलेलं होतं. त्यानंतर 1:38 या विमानाचा अखेरचा सिग्नल मिळाला आणि त्यानंतर यामधली जी एक अपडेट आलेली आहे ती अपडेट म्हणजे पायलटनं डिट्रेस कॉल अर्थात आपत्कालीन संदेश पाठवलेला होता, परंतु त्यानंतर कुठलाही या विमानासोबत संपर्क झालेला नव्हता. या विमानामध्ये साधारणपणे 230 प्रवासी प्रवास करत होते तर 12 क्रू मेंबर्स होते. या सगळ्यामध्ये अतिशय महत्त्वाची अपडेट म्हणजे माजी मुख्यमंत्री गुजरातचे विजय रुपाणी हे देखील प्रवास करत होते. त्यांच्या पीएनं देखील याबद्दलची माहिती आपल्याला दिल्याचं तिथल्या स्थानिक आमदारांनी मगाशी एबीपी माझाला देखील सांगितलेलं होतं. या विमानामध्ये 169 भारतीय प्रवासी होते. पोर्तुगालचे 7 नागरिक तर कॅनडाचा 1 नागरिक देखील होता. हे विमान मेघानीनगर या परिसरामध्ये कोसळलेलं होतं, ज्यामध्ये एका इमारतीवर हे कोसळल्यानंतर त्यातले 15 डॉक्टर देखील जखमी झाले होते. हम ईश्वर से, अल्लाह से प्रार्थना करते हैं कि इसमें लोग जो भी हैं वो बचे हो, जल्दी अच्छे हो. गुजरात राज्य से मेरी विनती है, गुजरात राज्य की तमाम जो अधिकारी भी यहाँ मौजूद है, आरोग्य मिनिस्टर भी आ चुके हैं. हम लोग यही चाहते हैं कि इसको तात्कालिक, जिन लोगों को तात्कालिक सारवार मिलनी चाहिए उनको मिलनी चाहिए और खास करके लिस्ट जारी करना चाहिए कि लोग आज फिक्र कर रहे हैं कि हमारे परिवारजन इसके अंदर फ्लाइट के अंदर थे, उनकी क्या हालत है, वो जानकारी के लिए लोग हमको भी पूछते हैं. तो मैं सरकार से विनती करता हूँ कि तात्कालिक जो लिस्ट, जो एयर इंडिया का फ्लाइट का लिस्ट था वो जाहिर करना चाहिए कि अंदर ये लोग इसके अंदर थे. गुजरात राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री विजय भाई रूपाणी के पीएस मुझे अंदर मिले, मैं अंदर गया था जहां तात्कालिक सरवार चाल दी है. वहां पर उन्होंने बताया कि सीएम पूर्व मुख्यमंत्री भी इस फ्लाइट के अंदर थे, उनका बोर्डिंग भी इनके पास, मुझे बताया कि उनका बोर्डिंग भी है. तो मैं समझता हूं कि हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जो कुछ भी इसमें जो बच गए वो जो जल्दी अच्छे हो जाएं. अल्लाह से, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं. ये दुखद घटना है हमारे सबके लिए. अहमदाबाद के अंदर ये हादसा मैं समझता हूँ दूसरा ऐसा बड़ा हादसा है ये फ्लाइट का, कि एयर इंडिया की दूसरी जो ये फ्लाइट गिरी, इसका पहले भी एक हादसा हुआ था, उसके अंदर भी कई लोग गुजर गए थे. प्रिलिमिनरी हमको जो पता चला है वो ये है कि एयर इंडिया की जो लंदन जाने वाली फ्लाइट थी वो टेक ऑफ के बाद यहाँ पे क्रैश हो गई है, जिसमें प्रिलिमिनरी हमें पता चला है कि 223 जितने पैसेंजर थे. यहाँ पे जिस बिल्डिंग के ऊपर गिरी है वो डॉक्टर्स का हॉस्टल है. इंसिडेंट बनने के विदिन 2-3 मिनट्स में पुलिस
बाकी सभी बॉडियां, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, कॉरपोरेशन वगैरह सभी लोग आ गए थे। फायर फाइटर वगैरह स्थल पे हाजिर है। लोगों को बचाने की और रेस्क्यू करने की कार्रवाई जारी है। ऑलमोस्ट 70 से 80% एरिया हमने क्लीन कर लिया, बाकी आने समय में हम लोग क्लियर कर लेंगे। लोगों के जो परिवारजन हैं वो आकर के अपने परिवारजनों को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उसमें ज्यादातर जो डेड बॉडी है उसको तो सीधा पीएम रूम में ले गए हैं, इंजर्ड है उनको अंदर हॉस्पिटल में रखा गया है। इसलिए जो लोग हैं वो ढूंढ रहे हैं कि हमारे परिवारजन कहाँ पे है। मेरे खुद के मत विस्तार के भी लोग इसके अंदर इस फ्लाइट में सवार थे, वो लोग भी मुझे मिले और बताया कि हमें आप तलाश करके दीजिए। लेकिन अभी जिस वक्त में टोटल कंफर्मेशन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अभी सबसे पहले लोगों को ट्रीटमेंट देने की जरूरत है और लोगों को ट्रीटमेंट दी जाए। कितना आंकड़ा हो सकता है, संख्या कितनी हो सकती है? मेरे ख्याल से प्लेन का आंकड़ा नहीं गिनूं, मैं बाहर का आंकड़ा गिनूं तो कम से कम 20 से 25 होंगे। 20 से 25 लोगों की। अभी जो लोग हैं उनको सारवार जल्द से मिल रही है, आप अंदर जाके आए? क्योंकि हम अंदर नहीं गए। मैं अंदर जाके आया, अंदर सारी सुविधा है, अंदर सारवार भी मिल रही है। पर आप सोचो इतनी संख्या में अचानक से लोग आ जाना और ये परिस्थिति का होना, निर्माण होना, उसके कारण बहुत भगदड़ है। फिर भी सिविल का स्टाफ अपनी तरीके से पूरा काम कर रहा है। जब हम लोग वहाँ पहुंचे, जब धमाका हुआ, हमारी ऑफिस उसके बाजू में ही है, धमाका होते ही पब्लिक का फोन आया, हम लोग वहाँ भागे तो देखा कि जो प्लेन है, प्लेन के गिरने के बाद जो बिल्डिंग में से लोग अपनी जान बचाने के लिए ऊपर से कूद रहे थे और कूदते टाइम भी बहुत लोग इंजर्ड हुए। अभी हम लोग जब सिविल के अंदर थे तो जो बॉडियां हैं जो प्लेन से निकली हैं वो तो अलग, जो बिल्डिंग में से भी लोग घायल हुए और सीरियस है और कुछ लोग એમ્બ્યુલન્સ અત્યારે અને એમ્બ્યુલન્સની અંદર ખાસ જે પ્રકારે મૃતદેહ અહીંયા લાવવામાં આવી રહ્યા છે પોસ્ટમોર્ટમ રૂમની બહાર, એના ઉપરથી ચોક્કસ લાગે કે મૃત્યુ આંક મોટો છે। જો કે સત્તાવાર રીતે હજી એક પણ આંકડો સામે નથી આવ્યો કે કેટલા લોકો મૃત્યુ પામ્યા છે, પરંતુ દ્રશ્યો ધ્વનિ એવે પ્રકારના છે કે જે દ્રશ્યો ટીવી સ્ક્રીન ઉપર ન દર્શાવી શકાય એ રીતના લોકો દાઝેલા હોય, સળગેલા હોય એ પ્રકારેના દ્રશ્યો સામે આવ્યા છે। કારણ કે જે વિડીયો સામે આવ્યો છે, જે રીતના આ દુર્ઘટના બની અને પ્લેન ક્રેશ થયું ત્યારે જે પ્રમાણેનો બ્લાસ્ટ થયો હતો એનાથી સ્પષ્ટ લાગતું હતું કે અંદર પ્લેનની અંદર બેસેલા લોકો દાઝ્યા હશે। આ ઉપરાંત જે જગ્યાએ આ પ્લેન ક્રેશ થયું છે એ રહેણાંક કોમ્પ્લેક્સ હતું, એટલે કે ત્યાં લોકો રહેતા હતા, ડોક્ટર્સ ક્વાર્ટર હતા, ત્યાં પણ લોકો રહેતા હતા। એટલે એની અંદર ક્વાર્ટર્સની અંદર રહેતા લોકો પણ દાઝ્યા હોવાની પૂરેપૂરી આશંકા છે અને એ લોકોને પણ અહીંયા લાવવામાં આવી રહ્યા છે। જે લોકો જીવિત છે, ઘાયલ છે, તેમને સારવાર માટે ટ્રોમા સેન્ટર લઈ જવામાં આવી રહ્યા છે, પરંતુ જે લોકોના ઘટના સ્થળે જ મૃત્યુ થઈ ચૂક્યા છે અથવા તો ઘટના સ્થળેથી હોસ્પિટલ પહોંચે એ દરમિયાન જેમના મૃત્યુ થઈ ચૂક્યા છે તેમને સીધા જ અહીંયા પોસ્ટમોર્ટમ રૂમ લઈ આવવામાં આવ્યા છે। આ ભીડ જોઈ શકો છો, આ રીતની ભીડ। આમાંથી કેટલાય લોકો સ્વયંસેવકો પણ છે, કેટલાય લોકો એવા છે કે જેમનું કોઈ ને કોઈ પરિચિત આ પ્લેનની અંદર સવાર હતું અને તે અમદાવાદથી લંડન જઈ રહ્યું હતું અથવા તો અન્ય જગ્યાએ જઈ રહ્યું હતું, ત્યારબાદ તેમની સાથે કોઈ પણ પ્રકારની વાતચીત નથી થઈ એવા લોકો પણ અહીંયા પહોંચ્યા છે। તેમના પરિચિત લોકો, તેમના સ્વજન લોકો કે જે પ્લેનની અંદર સવાર હતા તેનું શું થયું એ જાણવા માટે, શું એ લોકો ઘાયલ થયા છે, શું એમને કોઈ ઇન્જરી થઈ છે, આ તમામ બાબતો, તમામ માહિતી લેવા માટે અહીંયા પહોંચી રહ્યા છે। તો બીજી તરફ પોલીસ પણ આપ જુઓ છો એ મુજબ વધારે માત્રામાં અહીંયા જોવા મળી રહી છે। કારણ એ છે કે અહીંયા જે પ્રકારેની ભીડ થઈ છે એ પ્રકારેની ભીડને કાબૂ કરવા માટે અથવા તો જે એમ્બ્યુલન્સ આવી રહી છે એ એમ્બ્યુલન્સને પૂરતી જગ્યા મળે આવન જાવન કરવા માટે તેને લઈ અને પોલીસ કાફલો પણ અહીંયા મોટી સંખ્યામાં ગોઠવી દેવામાં આવ્યો છે। ન માત્ર સારવાર માટે પરંતુ પોસ્ટમોર્ટમ કરવા માટે પણ ખાનગી ડોક્ટરની મદદ લેવામાં આવી છે। રાજ્ય સરકારના આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા પણ તમામ ખાનગી ડોક્ટર કે જે અહીંયા અમદાવાદ છે એ અમદાવાદ ખાનગી ડોક્ટરને પણ સિવિલ હોસ્પિટલ તાત્કાલિક પહોંચવા માટેની સૂચના આપી દેવામાં આવી છે। તો આ દ્રશ્યો છે પોસ્ટમોર્ટમ રૂમની બહારના દ્રશ્યો કે જે દ્રશ્ય જોતા લાગી રહ્યું છે આશંકા જે સેવવામાં આવતી હતી શરૂઆતથી કે મૃત્યુ આંક મોટો હોઈ શકે છે એ પ્રકારેના દ્રશ્યો પણ હાલ અહીંથી સામે આવ્યા છે। તો આ દ્રશ્યો એક તરફ જે ઘાયલ લોકો થયા છે તેમને સારવાર માટે ટ્રોમા સેન્ટર લઈ જવામાં આવી રહ્યા છે, તો જેમનું મૃત્યુ આ દુર્ઘટનાની અંદર થયું છે તેમને પોસ્ટમોર્ટમ માટે અહીંયા સિવિલ હોસ્પિટલ પાસે જે પીએમ રૂમ આવેલો છે ત્યાં લઈ આવવામાં આવી રહ્યા છે। તો આ રીતના દ્રશ્યો સામે આવ્યા છે। મૃતદેહ પણ દર્શાવવાનો પ્રયાસ કરીશું, અહીંથી લઈ જવામાં આવી રહ્યો। જો કે ચોક્કસ એ ખબર નથી કે દુર્ઘટનાની અંદર મૃત્યુ પામેલા કોઈ વ્યક્તિ છે કે પછી અહીંયા અગાઉથી કોઈ મૃત્યુ પામ્યા હતા અને એનું પોસ્ટમોર્ટમ કરવા માટે લઈ આવ્યા હતા અને તેમને અત્યારે પરિવારને સોંપવામાં આવી રહ્યા છે। પરંતુ એક વસ્તુ સ્પષ્ટ છે કે જેટલી પણ એમ્બ્યુલન્સ હાલ અહીંયા પહોંચી રહી છે એ એમ્બ્યુલન્સની મોટા ભાગના જે મૃતદેહો છે એ આ પ્લેન
ક્રેશ થયું એ દુર્ઘટનાની અંદર મૃત્યુ પામેલા લોકોના મૃતદેહ અહીંયા લઈ આવવામાં આવી રહ્યા છે। તો આ રીતના દ્રશ્યો અહીંયા પીએમ રૂમથી પણ સામે આવી રહ્યા છે। મોટી સંખ્યામાં અહીંયા સ્વયંસેવકો પણ જોવા મળી રહ્યા છે। દુર્ઘટના થઈ છે તો એમાં લોકોને માહિતી મળે, જે લોકો પોતાના કોઈ સ્વજન કે પરિચિત વ્યક્તિને શોધી રહ્યા છે એમના સુધી માહિતી પહોંચે અથવા તો એનો મિલાપ કરાવે એ માટે પણ કેટલાય લોકો અહીંયા કામગીરી કરી રહ્યા છે। તો આ દ્રશ્યો પીએમ રૂમના, પહેલા અમે આપને ટ્રોમા સેન્ટરના દ્રશ્યો બતાવ્યા અને હાલ આ पीएम रूमना दृश्यो आपने बताया की ते काय नेमकी परिस्थिती आहे तिथली ती सांगता आहेत। मोठ्या प्रमाणामध्ये ज्या सध्या ॲम्ब्युलन्स येतात त्या ॲम्ब्युलन्समधनं आतापर्यंत जी कुठली लोक आणली गेलेली आहेत ते केवळ मृतदेहच असल्याचं त्यांनी आतापर्यंत पाहिलेलं आहे। मोठ्या प्रमाणामध्ये इथे गर्दी जमलेली आहेत, काही जणांचे नातेवाईक देखील दाखल झालेले आहेत, मोठा बंदोबस्त तैनात करण्यात आलेला आहे, बचाव कार्य युद्ध पातळीवर सुरू आहे। दरम्यान विमान दुर्घटनेनंतर रेल्वे प्रशासनाने अतिशय महत्त्वाचा निर्णय घेतलेला आहे। अहमदाबादमध्ये अडकलेल्या प्रवाशांसाठी आता वंदे भारत रेल्वे सोडणार असल्याचं समजतंय आणि त्यानंतर आता या ठिकाणी बचाव कार्याने वेग घेतलेला आहे। मोठ्या प्रमाणामध्ये सध्या ॲम्ब्युलन्स ज्या येत आहेत त्या ॲम्ब्युलन्समध्ये मृतदेहच आणले जातात अशी माहिती आता नुकतेच आमच्या प्रतिनिधी देखील दिलेली होती। एअर इंडियाचं बोईंग ड्रीम लायनर 787 हे विमान कोसळलेलं होतं आणि या विमान कोसळतानाच्या आधी इथल्या पायलटने देखील आपत्कालीन संदेश पाठवलेला होता, मात्र त्यानंतर विमानातून कुठलाही संपर्क झालेला नाही आणि हे विमान जे आहे ते मेघानीनगर इथल्या परिसरात जाऊन कोसळलेलं होतं, इमारती वर देखील कोसळलेलं होतं। दरम्यान ज्या इमारतीवर कोसळलेलं होतं तिथल्या अनेक लोकांनी आपला जीव वाचवण्यासाठी उड्या घेतलेल्या होत्या अशी माहिती इथल्या स्थानिक प्रतिनिधींनी दिलेली होती आणि या दरम्यान देखील अनेक जण जखमी झालेले होते। सध्या या सगळ्या जखमींवर रुग्णालयामध्ये उपचार सुरू आहेत। तर विमान ज्या भागामध्ये जाऊन कोसळलेलं होतं तिथे देखील जीवितहानी झाल्याची शक्यता वर्तवण्यात येते, परंतु या सगळ्याबाबतचा कुठलाही अधिकृत आकडा आतापर्यंत देखील जाहीर करण्यात आलेला नाही। याशिवाय या विमानातून गुजरातचे माजी मुख्यमंत्री विजय रुपाणी हे देखील प्रवास करत होते, त्यांचा देखील बोर्डिंग पास समोर आलेला होता आणि त्यानंतर आता केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा हे देखील तातडीने अहमदाबादसाठी रवाना झालेले आहेत। तर दुसरीकडे अग्निशमन दल असेल, बीएसएफ असेल, एनडीआरएफ असेल या पथकांकडून बचाव कार्य सध्या सुरू आहे। आगीवर नियंत्रण देखील मिळवलं जात आहे। अनेक भागामध्ये या विमानाचे जे तुकडे आहेत ते छिन्न विछिन्न पसरलेले पाहायला मिळतात। अनेक भागामध्ये हे विमान कोसळल्यानंतर आग देखील लागलेली होती, त्यामध्ये अनेक जण देखील भाजले गेल्याचं देखील इथल्या स्थानिकांनी प्रत्यक्षदर्शींनी देखील सांगितलेलं आहे आणि इंधन टाक्या पूर्ण भरलेल्या असताना विमान कोसळल्यानं ही मोठी हानी झालेली आहे आणि अर्थातच यामध्ये किती जीवितहानी झालेली आहे याबद्दलचा अधिकृत आकडा आत्ता तरी समोर आलेला नाही, परंतु मोठ्या प्रमाणामध्ये सध्या सिव्हिल हॉस्पिटल जे आहे या सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये ज्या ॲम्ब्युलन्स येतात त्या ॲम्ब्युलन्समधनं केवळ मृतदेहच येत असल्याचं या ठिकाणी जे उपस्थित आहेत हे सगळे नागरिक सांगतात। आमचे प्रतिनिधी देखील या ठिकाणी जे उपस्थित आहेत ते देखील प्रतिनिधी आपल्याला सांगत आहेत।